again, Chik Chik Gang, and the train is back again. And for the very, very first time that on this channel we are taking up Chen K, for the very first time, after so many requests from so many people about taking up, some tracks from the past. बहुत सारे उनके गाने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, बट द प्राइम मोटिव दैट आई वाज वेटिंग फॉर कि उनका कोई नया गाना आएगा तो आई टेक दैट अप, बिकॉज मैं एक नए गाने से शुरू करना चाहता था. लाइक आई पर्सनली डिड Chen K once on our channel, जब उनका चेंबर ऑफ सीक्रेट्स गाना रिलीज हुआ था. सो आई डिड रिलीज अ रिएक्शन टू दैट सॉन्ग, बट I'll actually agree to it as well that a lot of people claimed that I was slightly biased. I was slightly biased in that reaction, which I personally agree as well, because मैं थोड़ा सा biased था, because you cannot predict कि आप पहले किसके fan बन रहे हो, and like I personally have heard Chen K as well previously, like a couple of times, but there is this specific vibe that a person likes. हर बंदे का अपना एक जॉनरा होता है, विच यू विल एग्री विद मी एज वेल. ये नहीं है कि अगर मैं हिप हॉप सुनता हूँ तो मुझे हर चीज़ पसंद आ जाएगी एज एन इंडिविजुअल. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मी इन जनरल. सो बट अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी राइट दैट यू cannot judge a person based upon like a couple of tracks that you have heard, जो कि मे बी मुझे बहुत कुछ समझ भी नहीं आया होगा, because Chen K uses a lot of Urdu in his tracks. So I was like, this particular channel is not specifically about one particular artist, कि अगर उनकी किसी के साथ बीफ हो रही है तो will not take up the other artist. और बहुत लोगों ने मुझे ये समझाया भी है, and as as a member of the Chuk Chuk Gang myself, and as a member of this channel particularly, the prime motive of whom is to make sure that hip hop prevails. I cannot neglect an artist, and this is the reason why we'll be taking up Chen K regularly going forward. But the first track that हम उठाएंगे जो आज, उसका नाम है नफ्से अमारा. Now obviously like I could not have known कि what exactly नफ्से अमारा is. So बहुत लोगों ने मुझे टेक्स्ट पे ऑलरेडी बताया है कि क्या है ये नफ्से अमारा. एंड लाइक 3 नफ्स होती है इन जनरल. नफ्स आई नो, लाइक नफ्स हमारी हिंदी में भी यूज़ होता है. लाइक नफ्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तेरी नफ्स से वाकिफ़ हूँ. So it basically means like how a person is in general. Like technically it means like the pulse maybe, or technically it can mean like the breathing. I googled it personally, like what exactly does it mean. So it told me that nafs का मतलब तो यही है कि how a person is in general. And nafse amara का मतलब है it's like an intrinsic capability of yours which urges you to do evil. 3 नफ्स होती हैं. One that urges you to do evil. Second, that urges you to blame yourself, for the evil that you've done. And the third is nafse mutmain. अब ये word मैंने already सुना हुआ है, because like I follow उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जी को मैंने बहुत सुना है अपने टाइम में, अभी भी सुनता हूँ इनफैक्ट. तो उनका एक वो जो सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे गाने में, उनकी एक लाइन आती है व्हेन ही सेज मुतमईन ऐसे है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं, अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती है, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते. सो मुतमईन का मतलब बेसिकली ये था कि लाइक बीइंग एट पीस, कि मुतमईन ऐसे है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं, कि द पर्सन इज एट पीस despite knowing कि a lot has happened. So 3 sort of nafs which are there, and this nafse amara basically means कि the nafs which urges you to do evil is what I've been told, is what I've read as well. Now still I cannot expect anything from the track, because this is the first time that officially we're reacting to this, and बहुत टाइम बाद मैं सुन रहा हूँ Chen K को, जो कि मैंने पिछले कुछ टाइम से नहीं सुना है personally. And it says intro, so might be some intro to the new album that he's going to be coming up with. I don't know what exactly does this intro word mean in the name of the track, but we'll have to figure it out. I know I've blabbered a lot, but since we are taking up Chen K for the very first time, I had to explain what my viewpoint was, and I just want to apologize to all the people who are disappointed in one way or the other.
You might have seen that Chamber of Secrets reaction जिसमें आपको लगा हो कि मैं biased हूँ. I'm so sorry about it. I should not have done this. I accept my mistake. And now, without waiting any further, for the very first time, listening to Chenke on our channel with this track called Nafse Amara. This is an official video, Urdu rap song. And if in case you're watching us for the very first time, consider joining the Chuk Chuk Gang family because we're going to be taking up Chenke a lot more going forward and we'll try to understand. And the best part about this track, as people have told me, कि इसके अंदर like English subtitles भी हैं, so I'll try to understand जो भी मुझे नहीं समझ आएगा through what is in the subtitles. Getting in, Nafse Amara by Chenke, man. Here we go. Okay. वो देख फिर सुन कि तुझ पे नजरें कब से तेरी आवाज के लिए तरस रहे हैं पर कुछ नाराज हैं तुझसे पखरे तेरी जान नमाज देख कर तुझ पे तफरे सलाम और अल्लाह तेरा बकवास है जवाब इसका जिस मुल्क में तेरा नाम है हवाई आदम का मजहब इस्लाम ये राखी सावन से भी ज्यादा बदनाम है जिन मुल्कों में Wow. Okay. So, okay. I'm just trying to understand the concept here. So Chenke was praying to God, and then this internal side of Chenke, maybe the nafse amara, the nafs that is urging him to do evil, is at the corner. And one thing I noticed in the very beginning was when he was praying, that image of his in the corner was still not that prominent. लेकिन जैसे ही उनकी वो नमाज खत्म हुई, the evilness within him became prominent. That says a lot. That says so much about the power of Almighty. कि जब तक वो आपके साथ हैं, my God, the meaning, कि जब तक वो आपके साथ हैं, then the evil still will not affect you that much. But जैसे ही उनकी नमाज खत्म हुई थी, then the evil became so prominent. Now he's sitting with him on the table that he's eating at. Wow. This is okay. थोड़ा सा पीछे जाते हैं दोबारा. ये तरस रहे हैं पर कुछ नाराज हैं तुझसे पखरे तेरी जान नमाज देख कर तुझ पे तफरे सलाम और अल्लाह तेरा बकवास है जवाब इसका जिस मुल्क में तेरा नाम है हवाई आदम का मजहब इस्लाम ये राखी सावन से भी ज्यादा बदनाम है. Okay, so this evil side is trying to tell Chenke about all that is wrong with the world maybe, and all that he thinks himself that is wrong. कि मतलब जो चेनके को खुद ही लगता है कि दुनिया बोल रही है उनके बारे में, this evil side is telling it out loud, just so he feels down, just so he feels lonely, is all that I can see. Okay. Just move forward. नाम है हवाई आदम का मजहब इस्लाम ये राखी सावन से भी ज्यादा बदनाम है जिन मुल्कों में मशहूर तू वहाँ देखेगा नंगी हूर तू जिन मुल्कों में देशूर तू वहाँ देखेगा हम मगरबी दस्तूर तू खाल में सियाही सफेद बालवा तू खुद भी गुलाम मगरबी रिवाज का इंडस्ट्री का दुश्मन तू दुश्मन दज्जाल का पर उल्मा का फतवा तू काफिर समाज का कुर्ता शलवार तू का दुश्मन दज्जाल का पर उल्मा का फतवा तू काफिर. But religious scholars declare you a non-believer of the society. Wow. So again, this evil side is telling him that even though you claim that modernization and westernization of society is not good, even you have silver hair, even you have tattoos on your body. So how are you different? Trying to demoralize Chenke based upon the facts that he thinks are wrong is what Nafse Amara is all about, I think. I'm just trying to understand again. Okay. Wow. The meaning behind the video and the lyrics in combination. This is what I like about hip hop, right? You have so many ways to, इतने सारे जरिए होते हैं आपके पास अपनी बात रखने के, और आपके लिरिक्स तो है ही हैं, the primary thing that you have. Then आपके पास बीट होती है, बीट से ही आप
बहुत ज़्यादा बातें बोल सकते हो. जैसे इसकी बीट जो है पीछे की बड़ी डार्क सी टोन है, बिकॉज द सॉन्ग इज़ वेरी डार्क. बीट हो गई, वीडियो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. एंड दिस सॉन्ग इज लाइक अ लाइव एग्जाम्पल इज आई कैन सी फॉर नाउ that video is doing justice to the lyrics amazingly. Okay. देखेगा हम मगरबी दस्तूर, तू खाल में सियाही सफेद बाल, व तू खुद भी गुलाम मगरबी रिवाज का, इंडस्ट्री का दुश्मन तू, दुश्मन दज्जाल का, पर उल्मा का फतवा तू, काफिर समाज का. कुर्ता शलवार तू बाहर क्यों नहीं पहनता, मौसीकी हराम इस पे तेरा क्या कहना, भाई खोल दे जंजीरें कुछ तो रहम. म्यूजिक हराम है, कहाँ हराम है? I don't know. Is music haram in Pakistan? Is that the case? I have no idea about this, but just read it in the English version that if music is prohibited, what do you have to say to that? I don't know. Okay. पर क्यों नहीं पहनता, मौसीकी हराम इस पे तेरा क्या कहना, भाई खोल दे जंजीरें कुछ तो रहम का, मैं दोस्त तू तेरा इलाज करा जहन का, मुंह क्यों बंद है तेरा कुछ तो भौंकना, ये लोग बोल रहे हैं तू मुनाफिक फिरौन सा, लौट जा गुनाहों में लौट जा, कुछ नहीं कर सकता तू इस गंदी कौम का. गंदी तेरी भी तो एक बंदी, तुझे भी तो लगती है भूख बदन की भूख तो जरूरत एक मर्द की, फिर तूने ये कैसी रख दी पाबंदी. Wow. Just talking about the reality. शाम असर That it's natural to feel attracted towards the opposite sex. Male to female, female to male. God created this. Why are these things prohibited still is what he's talking about. कि जब ये पाबंदी जो हम लोगों ने, इंसानों ने बना दी है कुछ कुछ चीज़ों पे, that you cannot do this, you cannot do that. Certain things are so natural. Need, जैसे उन्होंने भी बोला कि ये चीज़ आपकी नीड में आ जाती है. Wow यार, this guy is talking about the reality of the world. The lyrics is what I personally concentrate upon and gem till now. Okay. जरूरत एक मर्द की, फिर तूने ये कैसी रख दी पाबंदी. शाम असर की किधर जा रहा है, क्या मैंने बात खत्म की, बना दूंगा तेरी जन्नत में दोज़ख सी ज़बान, ये तेरे पक्के दुश्मन की. मैं तेरी नस नस में, मैं तेरे ख्वाबों में, मैं तेरे रस्ते पे, मैं तेरी यादों में, मैं तेरी नस नस में. So he's basically talking about that the evil side, the nafs-e amara, or the amara part of the nafs is always there with you. It's in your dreams, it's in your essence in general. You cannot live without this nafs as well, because अगर आप पूरी तरह पॉजिटिव बन गए तो आप भगवान हो, तो वहाँ फिर इंसान बचे ही नहीं ना. तो दैट्स द रीज़न वाई द नफ्स, और ये सारी जो नफ्स हैं ये इनकी एग्जिस्टेंस ही इसीलिए है, बिकॉज इनके बिना अ ह्यूमन इज़ नॉट कंप्लीट. वेदर इट्स ईविल, वेदर इट्स द ब्लेमिंग देमसेल्व्स फॉर द ईविल, एंड वेदर इट्स द पीस बिट, द मुतमईन, उसके बिना पॉसिबिलिटी ही नहीं है for the existence of a human, is all that I can see from the lyrics for now. And the hook is, like very smoothly woven in the song as well. मैं तेरी नस नस में, मैं तेरे ख्वाबों में, मैं तेरे कागज पे. Wow, मैं तेरे कागज पे भी है. Even in the lyrics that I'm writing, the evilness is still there as well. It's not all positive. Wow. मैं तेरे कागज पे, मैं तेरी यादों में, देख कैसे बदले हाथ से तेरे घर वाले भूल गए लिहाज, तेरी भी उम्र का ये तार क्या रैन सबका सर फाड़ दे, रख के चेहरे पे इसके थप्पड़ मार दे. यूसुफ वाली किस्मत, थप्पड़ मार के कभी मिलती नहीं इज्जत, अपनों से नादिर ऐसे तो चिढ़ मत, पैसे फेंक दे खत्म मुश्किल वक्त पर, इज्जत तुझे इनकी क्यों चाहिए जिनकी नफरत, पैसे फेंक दे खत्म मुश्किल वक्त पर. So all that I read in the English bit of it was that कि if in case you want to see the reality of people, then throw away the money and you'll see what they think about you. I think ये तो बहुत सारे रैप आर्टिस्ट टच करते हैं इस चीज़ पे, that जब पैसा खत्म हो जाता है then you see
how people feel about you in general. कि पैसा जब पास होता है तो दुनिया अलग होती है, जब पैसा चला जाता है तो दुनिया अलग हो जाती है एकदम. So this is what I think is the meaning of that particular line. फेंक दे खत्म मुश्किल वक्त पर, इज्जत तुझे इनकी क्यों चाहिए जिनकी नफरत तुझे साफ दिखाई दे. तबाह जो तुझे करने का सोचे तन्हाई में, जता के फेंक दे मदद सारी खाई में. कोई भी मदद. The best line till now man. तबाह करना चाहे तुझको तेरी तन्हाई में, एंड मदद को जता कर फेंक दे सारी खाई में. सो ऑलरेडी सेइंग दैट कि व्हाई डू यू वांट, या फिर आप तेरे को इन्हीं लोगों की प्रेज क्यों चाहिए जो तेरे को ही नीचा दिखाना चाह रहे हैं, जो तेरे को ही जब भी तेरी हेल्प करते हैं किसी चीज में, देन तेरे को जता देते हैं उसी टाइम वो कि मैंने तेरी हेल्प की थी इस टाइम पे, नाउ यू हैव टू पे मी बैक. उन लोगों से ही तेरे को इतना लगाव क्यों है, इतनी मदद क्यों चाहिए. वाह यार, the lyrics are speaking, the lyrics are talking to you. जो तुझे करने का सोचे तन्हाई में, जता के फेंक दे मदद सारी खाई में. कोई भी मदद मुफ्त में नहीं करता, कोई भी ये दोज़ख वोज़ख से नहीं डरता. क्या निकाह क्या कुरान क्या पर्दा, पुरानी सोच तेरी जमाना बेपरवाह. कभी तू तपता है रोके कभी तू हंसता है, तस्वीरों में इन्हें तू पागल सा लगता है. कभी कमबख्त सा कभी दिलों में बसता है, कभी कमबख्त सा कभी दिलों में बसता है. So he's talking about how people's mind keep changing about you. They're not having a constant belief as to what sort of a person you are. कि nobody is like a complete pro with you, and nobody is like a complete con, like completely against you. So ऐसा क्यों नहीं है? Why do people keep changing their opinion about you? Is what this evil और नफ्से हमारा is asking Chenke in general, man. Crazy lyricism. भी तू हंसता है तस्वीरों में इन्हें तू पागल सा लगता है. कभी कमबख्त सा कभी दिलों में बस. Okay, some person has said तू लानत तुझ पर, मुझे लगा था तू नेक इंसान होगा, पर तू वो इंसानों में से है जो सिर्फ लड़कियों पर उंगली उठाना जानता है. अपनी हरकतें देख, और म्यूजिक इज हराम इन इस्लाम. ओह, I had no idea about this, man. I swear to God, I had no idea that this is what the case is, and this is where the line relates to कि म्यूजिक इज हराम. तो तेरा क्या व्यू है इस पे? वाओ. रोके कभी तू हंसता है तस्वीरों में इन्हें तू पागल सा लगता है. कभी कमबख्त सा कभी दिलों में बसता है. तुझे समझना कश्मीर वाला मसला है, असला है देखो इसके हाथों में असला है. इसको ना सुनना ये पाकिस्तानी कमबख्त है, व्यूज मशहूरी के लिए ये तरसता है. कुल्ला क्यों ये मोदी को दहशतगर्द बकता है. अगर तुझे मिलियन व्यूज पे आगे टिकना है तो कौम को भूल जाए. क्यों ये मोदी को दहशतगर्द बकता है. अगर तुझे मिलियन व्यूज पे आगे टिकना है तो कौम को भूल जाए. पे क्यों गाने लिखता है इन्हें कोई नहीं परवाह, इन्हें ना ये दिखता है कि आधे से ज्यादा गाने दावत जिना है. अकेला तू कुछ नहीं कर सकता. आधे से ज्यादा गाने दावत जिना है. In the English it says, most of the songs are talking about adultery in general. कोई लड़कियां दिखा रहा है, कोई पैसे दिखा रहा है, कोई गाड़ियां दिखा रहा है, कोई क्लब्स दिखा रहा है. So this is what he's talking about. Like why do you still keep talking about the qawm in general when you know that the only thing that these people preach is adultery? Why do you still keep talking about them? They don't care. They don't care about your views. They don't care about what sort of music you are making. If in case you want to touch 1 million views, then stop making music about the audience. Talk about your own self. Talk about cars. Wow, this evil side is actually talking about some dank, dark things. With Chenke is all that I can see, man. And the lyrics, again, we'll keep touching on the lyrics, man. अकेला तू कुछ नहीं कर सकता. ये वक्ती मशहूरी के दिन 2-4 जरा गिन जाके. आईना देख और पूछ अपने आप से कि तेरी औकात क्या मेरे बिना ये. Wow. मैं तेरी नस नस में. Okay. This is good. This is good. ख्वाबों में मैं तेरे रास्ते पे मैं तेरी यादों में मैं तेरी नस नस में. He has black roses, man. Black roses. भाई के गले में भी बेड़ियां हैं. So I think वो भी गुलाम है, किसी चीज का. दज्जाल का maybe, because he said दज्जाल as well a couple of times, like the evil. So वो भी गुलाम है. Cannot come out explicitly all the time. मैं तेरे ख्वाबों में. This is scary, man. This is मैं scary. तेरे कागज पे मैं तेरी यादों में
bass guitar. Wow. Wow. This is beautiful, man. The end. Wow, the outro with the guitar and the piano, man. Crazy. You know, it compensated for the evil that we heard previously. ये जो darkness थी, वो भी EDC tone continue रही, but थोड़ा soothing tone भी आ गई थी end में. Wow. I appreciate, man. I appreciate the sort of usage of everything that you get as part of hip hop. Not just lyrics, not just beat, not just video. Everything. So many thoughts. I think so much thought went into creating this song. कि सिर्फ उठ के लिख के lyrics mic पे नहीं आ गया चैन के is all that I can see. He did a lot of research while creating the video, especially, man. Hats off to and then direction, editing, VFX and color grading by Chenke himself. But then hats off to the director of photography and camera, you know, Awais Anwar Khan. Hats off to you, man. Because this, you know, video played a lot of the part while conveying the sort of emotion that is there. And then even mixing, mastering and lyrics are by Chenke. So hats off to him as well. And production is by Cypher Media Solutions. So hats off to them for the beat in the background as well. So crazy, man. This was very, very good. And the first track that we are doing by Chenke and the sort of lyricism that he showed, you know, still not my kind of music. I'm just going to be very honest, man. This is not the sort of music that I keep going back to. I'm a you know, happy-go-lucky sort of a person. So मेरा music genre ही अलग है एकदम. But because people wanted me to do this, and this is, you know, hip-hop has no boundaries. Hip-hop has no specific, you know, what do you say? Like no specific musical boundaries in it. Everybody has their own choice of music. Every creator, every artist has their own way to, you know, to how they want to create hip-hop. So if this is what Chenke is about, we'll appreciate him for what he is. And let's just try to see what all tracks he has done in the past. So if in case you have any more suggestions, Instagram in the link, Instagram in the description, Instagram video के भी यहाँ कहीं आपको दिख रहा होगा ऊपर. So please let me know about more suggestions by Chenke. I'll take them up as well. But for now, thank you so much, man. थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है ये, but we had to decode what the meaning of the song was about, and I think the English subtitles, they actually helped me a lot. And some people who texted me the meaning of certain things which can be involved in the track, thank you to you people as well. I really appreciate it. And without waiting any further, man, I'll be signing off. I'll try to re-listen the track once more at least to see, you know, to see what all I may have missed maybe in the video as well. But thank you, man. I'll be coming back with more reaction. But for now, if in case you like the content, subscribe and then leave. I'll be back with more. Bye.